But let's get back to our callers then. We have Shreyas who calls in from Ahmedabad and he has investments in JP Associates. Shreyas? Yes, ma'am. Yes, आपका सवाल? वो मैडम मेरे पास जेपी एसोसिएट 34.5 की एवरेज से मींस के 20,000 शेयर पड़े हुए हैं और आगे भी इन्वेस्ट करने की उसमें सोच रहे हैं। जेपी एसोसिएट्स में? हाँ, जेपी एसोसिएट में। अच्छा, तो आपकी एक्सपर्ट की क्या राय है कि इसमें क्या करना चाहिए? आगे इन्वेस्ट करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप या फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, आपको एवरेज करना है जेपी एसोसिएट्स में? एवरेज बोले तो एवरेज, वरना जो भी हो, जैसे कि अभी परचेस करे तो बीच में निकाल दे, ऐसे कुछ। ओके, Kunal, what would you recommend to Shreyas? Do you think that it's a good idea to enter into JP Associates at current levels? We're seeing a pop today, but the concerns on the debt, that JP Associates is servicing is rising as opposed to decreasing. So fundamentally, it probably has more concerns emitting now as opposed to earlier. So what would you recommend to Shreyas, and if you could answer in Hindi? Yeah, I'll try talking Hindi as fluently as possible, Ekta. But I think जब हम JP Associates की बात करें, तो श्रेयस अगर लास्ट 1.5 years की बात करें तो स्टॉक 80-85 से एक ऑलमोस्ट ऑन अ मंथली बेसिस एवरी मंथ एक करेक्शन फेज में जाता हुआ नजर आ रहा है। इस बार जो इस महीने का करेक्शन है वो काफी सिवियर है, बिकॉज हमने देखा है कि मार्केट्स हाई लेवरेज्ड कंपनीज या हाई डेट कंपनीज, जैसे एकता पॉइंटेड आउट राइटली, इनको पनिश कर रही है सिग्निफिकेंटली। नॉट जस्ट जेपी एसोसिएट्स, मेनी अदर कंपनीज आर गेटिंग पनिश लाइक दिस। सो जनरली जब ऐसा होता है तो हम देखते हैं कि वो स्टॉक ऑलमोस्ट ऑन 6 months 1 year बेसिस एक साइडवेज टू डल जोन में आ जाता है, जहां पे बाइंग अट्रैक्टिव बिल्कुल भी नहीं होती है। इवन दो स्टॉक्स ऑलमोस्ट 70 रुपीज करेक्ट कर चुका है लास्ट 1.5 years में, बट स्टिल ये ऐसा नहीं चार्ट दर्शाते कि यहाँ से बाय होता है ये। मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप जितना जल्दी हो सके इसमें से लॉस बुक कर लीजिए, भले वो एक सिग्निफिकेंट लॉस भी क्यों ना हो, बिकॉज मोर देन द कैपिटल लॉस इट इज मोर ऑफ द इमोशनल लॉस विच यू हैव टू गेट ओवर वेरी क्विकली ऑन द स्टॉक। सो आई थिंक गेट आउट ऑफ द स्टॉक एंड स्विच टू सम अदर लार्ज कैप नेम्स, जैसे कि मैंने कुछ एक स्टॉक्स के नाम डिस्कस किए थे। L&T है, कैपिटल गुड स्पेस में काफी अच्छा स्टॉक बनता हुआ नजर आ रहा है। डिश टीवी ऑल्सो आई थिंक अगर बाय ऑन डिप्स भी करे तो काफी अच्छा स्टॉक बन सकता है। रिटर्न वाइज पोटेंशियल 15 to 20% ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months मिल सकता है स्टॉक्स में। All right, that's the advice. But up next, we have a query from Rahul, who's written to us from Mumbai. He says he wants to invest between 10 to 15,000 rupees a month in mutual funds. So he's looking to start an SIP. He's a first-time investor, and Harshvardhan, he's looking for some advice on how to allocate this SIP money into various funds. Well, Sumera, what I could recommend for Rahul is that he create a portfolio keeping in mind an underlying allocation. What I mean by an underlying allocation is that whatever amount he wishes to invest into equity SIPs, he makes a particular percent, he allocates a particular amount for a particular sector, for a particular category. For instance, he could put 60% of whatever he wishes to invest into large caps, 30% into mid and small caps, and 10% he could put into in any of the sector funds or an international fund or thematic funds, whatever he's comfortable with. So in this way, he knows that the broader structure of his portfolio looks like 60, 30 and 10. Now he could divide, I'm assuming a 10,000 investment, he could divide this and split this money in the following manner. He could invest about 2,000 rupees in IDFC Nifty fund, 4,000 in ICICI Dynamic plan, 3,000 in HDFC Mid-Cap Opportunities Fund, and 1,000 in Franklin India Feeder US Opportunities Fund. This is an international fund. The reason why I emphasized upon the underlying asset allocation, the underlying allocation into each market capitalization, is that going further, if he's going to say probably 2 or 3 years down the line, he's going to review his portfolio. If a particular scheme is not performing, he would need to change that. Now change that into another scheme of the same category. You would not change the category. If a large cap, particular fund in a large cap is not performing well, he needs to stop that and invest into another fund of the large cap category, not of any other. So he maintains his portfolio allocation at 60, 30 and 10. So this is the way he could start off and go further with his investments. Okay, well, that's the personal finance answer. Harshvardhan, thanks very much for that. Let's